So good morning students. So today we'll discuss a new topic, that is determinant, chapter number 4. This is most important chapter, carrying approximately 10 to 11 marks in your final exam. So what is the determinant? It is the modulus value of the square matrices, or a absolute value of square matrix is called determinant, and it is always square. ये ध्यान रखना है आपने. It should be kept in the mind that the determinant is always square. Either it will be 2 by 2 determinant or 3 by 3 determinant. Means there are number of the row must be equal to number of the columns. For instance, here it is first row, second row, column 1, column 2. So horizontal lines are called rows and vertical lines are called column. It is 2 by 2 and it is 1 2 3 1 2 3, so it is 3 by 3 determinant. So one more property, that is, if any determinant is multiplied by any scalar, then only one line gets multiplied. That means either this line will be multiplied, either this line will be multiplied, either this line will be multiplied, either this line will be multiplied. Means only a straight line will be multiplied, either row 1 or row 2, either C1 or C2. For instance, if you want to calculate 3a, then you can multiply a straight line, either R1, that is 3 6, remaining will be the same, or R2, that is 3 3 9, 4 3 12, R1 remain the same, or column wise, like this way, it is 3 9 and the second column will be remain the same, or 1 3, first row, first column remain the same, and second will be, it is 3 2 6 and 3 4 12. So but in case of matrices में क्या होता था, if there is 3a then every element should be multiplied. ठीक है ना. यदि आपके पास मैट्रिसेस में यहाँ पे 3a होता और मैट्रिसेस होती है आपके पास, फॉर इंस्टेंट लाइक दिस वे, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट गेट मल्टीप्लाइड, दैट इज 9 18 9 12 in case of matrices, in case of it is matrix. But in case of determinant, only one line gets multiplied. So determinant can be reduced in a single value. Unlike matrices, determinant can be reduced in single values. Matrices को आप single values में नहीं ओपन कर सकते, जबकि determinant को आप single values में reduce कर सकते हैं. So हम सीखेंगे किस तरह से determinant को evaluate किया जाता है. So exercise 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, evaluate the determinants. So first is 2 4 minus 5 minus 1. So this is R1, this is R2, this is C1 and this is C2. आप किसी भी लाइन से either with R1 और either with R2 और either with C1 और either with C2, किसी से भी एक्सपेंड करोगे आपका आंसर सेम आएगा. पर हम पहले R1 से सबको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप स्किल्ड हो जाएं वैल्यू निकालने में. सो देखिए किस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे. सो फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग थ्रू R1. सो R1 का दिस एलिमेंट इज रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, सो इट इज A11 एलिमेंट. 1 plus 1 that is 2, so the sign will not change, it is 2, deleting this one, remaining is -1. Then this element is A12, 1 plus 2 3, so minus sign will come and it is 4, deleting this one and deleting this one, this is -5, so it become -2 plus 20, so it is equal to 18. So क्या करना आपने, यदि नहीं समझ आया तो पहले यहाँ पे R1 में देखना है, दो एलिमेंट्स हैं
2 एंड 4, फर्स्ट एलिमेंट को आपने 2 है इसको यहीं पे लिख दोगे और इसके जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स हैं उनको डिलीट करोगे, आपके पास विजिबल जो रहा वो केवल -1 रहा है, लाइक दिस वे। आप पेपर स्ट्रिप से कर सकते हो लाइक दिस वे। सो केवल आपके पास क्या रहा -1, सो राइट डाउन -1 हियर। देन सेकंड आपके पास है 4, देन अगेन 4 से वर्टिकल और हॉरिजेंटली डिलीट कर दीजिए टर्म्स को। इट इज़ लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। सो इट इज़ -5 रिमेनिंग, तो 4 इंटू -5 पर क्या है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये है रो 1 और कॉलम 2 का। सो 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट। फिर से देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट इज द मेथड टू इवेल्युएट डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर। अब हम 3/3 ले रहे हैं, इसको किस तरह से किया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर है 4th। मैं क्वेश्चन नंबर 4th में ये प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट 3a = 27। ये मॉडुलस में वैल्यूज लीजिए, दैट मीन्स इट इज़ अ इनडिटर्मिनेंट, ये मैट्रिसेस है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एम इज टू चेंज इनटू, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 3a, so 3a, so a is a matrices here, so it is 1 0 1 0 1 2 0 0 4, so it become 3 0 3 0 3 6, every element get multiplied because it is a matrices. Now we have to calculate modulus 3a, so for modulus 3a change the matrices into determinant. Now expand it, we'll expand through R1, expanding through R1. So first element is this one, this element is A11 element, this is A12 element, this is A13, first row column first, first row column second, first row column. So 1 1, that is positive, so sign will not change. Now deleting the vertical and horizontal columns, so what will you get? We get 3 6 0 12, write down here 3 6 0 12. Next entry is 0, so it is A12 element, so minus, so 0, then again deleting the corresponding terms vertically and horizontally, we get 0 6 0 12, 0 6 0 12, and next is +3, again y +3 because 1 + 3 4, so it is even number, so sign will not change, so deleting here it is like this way. So it is like this way, the remaining is 0 here 0 3 0 0, so it is 0 3 0 0, so expanding it, so it is 3 12 3 is 36, then minus sign because it is A12 element, minus 0, so 0 multiplied by anything is 0 3, so it is 0, then minus sign 3 into 0 0, so it is 36 3 is a 108. Now we will calculate 27a. So what is 27a? That is 27 and then determinant a 101 012 004. So expanding through R1, so it is first element is again 1, deleting terms, it is 1 2 0 4, second term is 0 0 multiplied by anything is 0, so it is 0 2 0 4 0 2 0 4, and third is +1, so it is 0 1 0 0 0 1 0 0. ये देख लीजिए आप, आपने डिलीट किया इस तरह से,
So it is 0 1 and 0 0. So it is 27 and it is 4 minus 0, then it is 0, then again it is 0. So 27 4 ja 108. So which is equal to left hand side, hence proved. So in this way you will solve question number second, first and second part, then also third question. This question, third question, I have solved question number 4. You will solve question number 5th, both the parts, both four parts, and question number 6 also. Also question number 7. In question number 7, this is a objective type question. So expand it. So it is 2 minus 20 is equal to 2x square minus 24. Then solve them. So you should do this exercise from question number 1 to 8. So this is your homework. Thank you, please.